Well, please, can you just turn around? Because people in the back can't see because of the media and everything. So if you could just say hi to everyone. Guys, please give them a huge round of applause for all of them. A lot of fun things lined up. Firstly, I want to ask you, how does it feel to like come out and actually promote a song? For the past few months, it's all been online. Everybody's been just doing it digitally. But now we are in person, and of course, we have not exactly back to normal, but we're somehow getting there. We have the media and everything lined up. So, how does it feel to be actually doing this offline at a college? And there's no audience like the youth. I'm pretty sure you'll agree to what I say. So, how does it feel, sir? Well, actually, this is my first time actually, so I don't have any experience before this, and I'm so glad to be here. Seriously. So I think दो दिन पहले एक इवेंट में मैं था क्या बॉलीवुड सोलो सिंगिंग एंड मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई कौन था मेरे साथ इतना याद नहीं है और मैंने बोला था यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा आई विश पर्सनली मैं आता आप सबके पास और मुझे 2 दिन में मेरी विश पूरी कर दी आप लोगों ने सो Hello everyone. We are very happy that we are with our song. We are with all you guys, and I hope this song is really very nice, and just everybody will enjoy this song, and it will do a well even in the music market also. That is what we feel. I'm not sure how many people even know that I'm a Midi Bhai Alan myself. Also, 2 years I was here. So yeah, I think it's always a pleasure coming back here, and the fact that we have Ankit Bhai, we have Mahesh, and obviously my father here, just adds to the pleasure. So yeah, really looking forward to the event, and thank you so much for having us here. Alright, now we're talking about the song. I want to know what was the entire idea of the song. How did this inspiration just come from? Because all of us have been so, I mean, on a personal level, we've all experienced different emotional states in this lockdown, Some of us just didn't want to work. Like, I wanted to sleep all day. But how was this inspiration? What was the thought behind creating something like this, a spectacle? So, what was the entire... So I think I first got the song from our composer who is Aniket Shukla. He couldn't be here because he's in Kanpur right now. But he sent me the song, and the first voice that came to our mind, like my father's and my mind, was obviously Ankit Bhaiya. So we heard the song, he's like, this is Ankit Tiwari's song for sure. So then Aniket was close to Ankit Bhaiya. So he sent it to Ankit Bhai, and then he really liked the song, and then he came on board, and then he really made the song beautiful. After that, we were casting, and I knew that Mahesh was always a model, and he's won quite a few awards there. So Mahesh, I knew Mahesh through, I think we spoke on Instagram first. Yeah. So I knew Mahesh, and then I asked him, do you want to be on board? And he was really excited, and he was a big fan. I think he is a big fan of... I was a bit skeptical. Music video कभी किया नहीं था, but इसने बोला अंकित तिवारी का song, I was like, I'm in. We had Mahesh on board, and luckily the director we took also had worked with Ankit Bhai first. Yeah. So he First knew, single. Yeah. So Ankit Bhai's first single was directed by him. So all in all, then we got Anaya on board, and things fell in place. The song was trending on YouTube after that, and it was also doing well on other platforms. So yeah, I think all in all it worked out well. So that was pretty much the story. Right. Yep. So we always see the end result, which is of course the song. Nobody knows what goes behind the song, making that song. We of course face a lot of difficulties, in making a certain song. So इस गाने में especially कोई ऐसी problems आई? Were there any difficulties because the pandemic and everything goes on? So were there any difficulties that you encountered while shooting this? Personally तो कोई difficulty नहीं आई because crew इतना अच्छा था, सिद्धांत sir, then विनीत, सबने इतना cooperate किया and एक difficulty आई सिर्फ गर्मी ज़्यादा थी, बस और कोई difficulty नहीं थी, बाकी तो everything went smoothly. Yeah. That's great. And we're seeing the end result. Of course, it's going to be a chart buster. So once again, for this entire song and the entire cast, please give it a round of applause.
We have certain questions from the audience that they want to ask you. So we're going to leave it out to the audience. Anybody who wants to ask anything, just raise their hands and we can go ahead with it. Yeah, okay. We have one person there. Yes. So my question is to Vinit, sir. Sir, Wallet has completed 3 years. So what has your experience been so far? It's been beautiful. First of all, thank you for knowing that. Yeah. So it's been 3 years now. I think we've been associated with over 400 songs now. Yeah. And it's been a beautiful experience because we've worked with so many artists. In fact, we work with almost everybody on YouTube, all the digital influencers, now even the Bollywood singers, and even new talents. It's been a beautiful experience. Going forward, what we plan to do is we want to scale this up more. Hopefully, we'll have more songs with Ankita also coming forward. And yeah, we have a lot more singles coming up. We have a lot more music in a lot of languages. So it's been a beautiful, and it's been a learning experience. I've learned quite a lot in this journey. Hopefully, I can implement it in the future. Thank you, sir. Definitely. Thank you so much for that question. Yes. Do we have anybody more who wants to ask anything from the audience? Yep. Good morning, good afternoon, sir. My question is to Mahesh, sir. What was your reaction? What was your reaction when you reached the milestone of 1 million subscribers in your YouTube channel? Firstly, for that, I think we should all give him a huge round of applause. It's not an easy task to reach that. So basically, I've been doing YouTube since 2014, and it's not easy, especially right now with so much competition. It's not easy, and जो एक बूस्ट बोलते वो बूस्ट हुआ इस लॉकडाउन में बिकॉज लोग घर पे थे एंड दे हैड नथिंग टू डू सो लाइक यार यूट्यूब पे चलो कुछ देख लेते हैं माय वीडियो स्टार्टेड पॉपिंग आउट सो रिएक्शन तो क्या बोलते हैं यार आई वाज रिएक्शनलेस बिकॉज रीचिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाज लाइक अ ड्रीम टू मी बिकॉज ऑथेंटिक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सो या आई वाज वेरी हैप्पी दैट्स ऑल आई कैन से Thank you. Anybody else? Okay, we have someone at the back. Yes. My question is to Ankit, sir. Sir, in future, who do you want to collaborate with? जो भी ऐसा कुछ मैंने सोचा तो नहीं है कि इसी के साथ पर्टिकुलर करना है बट आई एम ए म्यूजिशियन और म्यूजिक बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि फिल्म म्यूजिक बहुत अच्छा होता है नॉन फिल्म में हम कम ध्यान देते हैं बट मेरे लिए ऐसा नहीं है और आज के सिनारियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जितना फिल्म म्यूजिक पे ध्यान है लोगों का उतना इंडी पॉप पे भी फोकस कर रहे हैं सब लोग जैसे विनीत इतना ध्यान दे रहा है मुझे जितनी भी बातें होती हैं फ़ोन पे मेरे इसके साथ तो मुझे पूरा फील होता है कि ये बहुत बहुत करना चाहता है तो कोलैबोरेशन आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है होना चाहिए एंड आई विल डू फॉर श्योर बस कौन किसके साथ ये मैंने प्लान नहीं किया हुआ है कुछ भी अच्छी कॉम्बिनेशन होंगे तो ऑफ कोर्स मैं करूँगा I think just to put it in a better way, that question maybe she meant कि आपके दिमाग में ऐसे कोई म्यूजिक कंपोजर्स जो आपके फेवरेट रहे हो उनके गाने जो आप मेरे एक्चुअली एज ए म्यूजिशियन अलग अलग मूड भी रहता है ना कि हर वक्त मैं सैड गाने नहीं सुन सकता या हर वक्त मैं रोमांटिक गाने नहीं सुन सकता और मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ मेरे गाने में बहुत ऐसा लगता है ना कि बहुत दुखी आत्मा है वैसा मैं हूँ नहीं Because Ankit bhai sing from his heart. मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ बाकी ऐसा सवाल बड़ा मुश्किल में डाल देता है कि which is your favorite singer और composer और लिरिसिस्ट जो भी क्योंकि अलग अलग मूड पे अलग अलग गाने सुनने का मन होता है कभी पुराने गाने सुनने का मन होता है कभी आज के गाने सुनने का मन होता है कभी सिर्फ पियानो पे कुछ अनप्लग सुनने का मन होता है या कभी कुछ बहुत ज़्यादा अभी आप किसी क्लब में हो तो आपको अनप्लग नहीं सुनोगे ऑफ कोर्स तो वो अलग अलग मूड पे डिपेंड करता है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो तब से अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि एक चीज़ कभी नहीं जाएगी जो बेसिक मेलोडी होती है हमारे गानों की वो पहले थी आज है
और कल भी रहेंगे, तो वो कभी हाँ So can you please sing a song? of course मैं Please, sir. But Please, ये थोड़ी कम आवाज है मुझे लग रहा है सर, ऐसे थोड़ी ना अभी सर इज सच अ ग्रेट सिंगर, तो थोड़ी और आवाज करो प्लीज। मैं एक्चुअली ये यही गाता हूँ, मैं मैं नहीं जाऊँगा, यस बट अभी यू नो गाना अभी आया है तो मुझे Right. थोड़ा देखना पड़ेगा लिरिक्स। तो आई थिंक एक काम करते हैं, हाँ। वी हैव द एंटायर एवी, तो एक बार वो प्ले करते ये भी हैं। देखते हैं। हाँ एवी देखते हैं, उसके बाद आई थिंक वी कैन रिकलेक्ट द लिरिक्स Then एंड नो we'll वी sing. कैन For sure. या Yeah. सो कैन वी हैव द एवी प्लीज एंड द लाइट्स डिम्ड इफ पॉसिबल। सो इट्स ओके। And I'm pretty sure now he was humming the lyrics, so he remembers it. And he's the man behind some amazing songs. How many of you heard Galiya? भाई How many of you have heard Sun Raha Hai Na Tu? बाई चांस अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो Yeah, no problem. तेरे हाथ किसी के हाथ में होंगे, मिलके भी अब हम साथ न होंगे, याद में तेरी हंसते हंसते रो दिया मैं यहाँ, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, तुम होगे जहाँ, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, तुम होगे जहाँ, ओहो Thank you so much. Thanks. It's such a brilliant song. I think it takes you to a different vibe altogether. All credit goes to composer and lyricist. Yes, Actually absolutely. वो यहाँ पे है नहीं, तो मुझे बड़ी बेहद खुशी होती है जब एज ए सिंगर मुझे कोई बुलाता है, कोई कंपोजर। बहुत कम बुलाया जाता है, बट Because you himself is a आई एम अ कंपोजर सिंगर, दैट्स व्हाई। तो जितने भी गाने हैं जैसे कि गलियां या सुन रहा है ना तू है कि नहीं, और दी जितने भी वो मेरा खुद एज अ कंपोजर सिंगर है, तो मुझे इसलिए खुशी है इस गाने को लेकर बहुत कि एज अ सिंगर मैंने अपना मुझे बुलाया गया, और मुझे ये काफ़ी अच्छा एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि सामने वाले कंपोजर की थॉट्स क्या है, मैं अपने थॉट्स गाते रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सामने वाले कंपोजर के क्या थॉट है, वो क्या चाहता है मेरे से एज अ सिंगर, और आई मीन ये इसमें मुझे बेहद खुशी मिलती है। सो थैंक यू। That's a great thing, sir. Please give him a huge round of applause, because it takes a lot to be playing a role. He's actually a multimedia mercenary, as we call him. You name a thing and he knows how to do it. So it's a great Thank you. thing in itself. Thank So एक चीज़ मैं आपसे तो शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, और मेरे लिए एक बड़ी बेहद खुशी की बात है कि मैं पहला टेलीविजन डेब्यू करने जा रहा हूँ, और it's my first reality show on ZTV। मेरे शो का नाम है इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। ये
एक्चुअली ये इंडिया का नहीं, ये दुनिया का पहला म्यूजिकल लीग है जो फैब से शुरू होने वाला है. So that's it. We wish you all the best. And the show is going to be a super hit. Thank you so much. Now I think sir, अभी हमने शायद आपके मुंह से एक दो गानों का नाम सुना. मैंने already बोल दिया था, but sir अगर if we can have a few